Let us discuss about the distribution system. So, distribution system is a system by which the finished product from the factory comes to the end user. So, raw material are brought into the factory, thereby the company manufacture the different kind of medicine. So, that medicines are undergoing labeling and packaging. After labeling and packaging, the product is stored into the All India depot. All India depot supply the product to the regional depot or C&F. Regional depot and C&F both are same. Regional depot or C&F supply the product to the stockist, and stockist supply the product to the chemist, and chemist supply the product to the patient or patient parties. So, this is all about the distribution system. So, in that particular system you see that when the company sell the product to the stockist in a particular month, that is called the primary sale, and when the stockist sell the product to the different chemist counter in that particular territory in a particular month, that is called that secondary sale. Now, we will discuss about that why chemistry is very much important for us. Chemistry is very much important because chemist supply the medicine according to the doctor's prescription. So, chemist knows that which company's products are moving very well and which company's product is not moving very well. So, that is why to get the information about the doctor's prescription habit and the movement of your products as well as your competitor products, you have to depend upon the chemist counter. So, you will ask some relevant question. That question answer session is called RCPA. RCPA, that stands for Retail Call Prescription Audit or Retail Chemist Prescription Audit. Through RCPA, a medical representative comes to know the movement of his company's product, whether his company's products are moving or not. If any particular brands are moving, then what brands are moving, how much in quantity, who are the doctors those who are writing your company's product, as well as you have to collect the information about your competitor's product. Who is your competitors, what is their molecular combination, and who are the doctors those who are writing your competitor brands. Accordingly, you can maintain a chart by which you can understand which doctors are writing your company's brand and which doctors are writing your competitor brands. Accordingly, you can select those doctors who are prescribing your products, and when you meet with the doctors, you can tell that yes, thank you for giving me the prescription of that particular product. Sir, please increase the prescription support or please keep on support on that particular products. If any doctors are not writing your company's product, but he is writing your competitor brands, on that times you can tell the doctor, we also have same molecule but the different USP, and that USP is going to help you a lot to your patient. In this way, you can convince the doctor to generate the prescription. So, RCP is going to help you to select the right doctor for the right product. See, after collecting the information about your product movement and the competitor product movement, then you understand that what could be the sale of that particular area. If you see that much of products are not sufficiently available into the chemist counter, on that times you can approach the chemist counter to take the order. So, that order taken process is called POB. See, POB stands for personal order booking. As because personally you are showing interest to take the order to make it available as soon as possible, so it is called POB.
Sometimes when I am going to launch a new product, when you meet with the doctor, doctor will not write your product until and unless your product is available in the chemist counter. So on that time, while you meet with the chemist counter, he will tell, today I am going to launch a new product. So please make it available in a minimal quantity so that you can honor the prescription of a doctor. Now I am giving one demonstration in the chemist counter, how you will take the information about your product, means RCPA. RCPA is nothing but a one kind of market survey. जैसे कि पटना हेडक्वार्टर में एक फार्मेसी का नाम है मेट्रो फार्मा, वहाँ जाके मैंने बताया, मुन्ना जी, आई एम सुधीर कुमार, आई एम कमिंग फ्रॉम कैरियो फार्मा, तो मेरा क्या जेलुसिल चल रहा है? बोला हाँ भाई जेलुसिल चल रहा है, बताइए तो कौन कौन सा डॉक्टर लिख रहे हैं? तो डॉक्टर अशक दिंदा लिख रहा है, डॉक्टर PK झज्जर लिख रहा है, डॉक्टर SK साव भी लिख रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग नाम लिख लेंगे। अच्छा, आप डॉक्टर झज्जर तो लिख रहे हैं, बताया कितना लिख रहा है? 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स। तो मुन्ना भाई बताया 5 स्ट्रिप लिख रहा है। एक दिन लिख रहा है या 5 दिन में लिख रहा है? नहीं, हर रोज़ लिख रहा है। अच्छा, हर रोज़ लिख रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग लिख लेंगे कि कितना, कौन कौन सा डॉक्टर कितना कितना प्रोडक्ट उस ब्रांड के लिए लिख रहे हैं। लिखने के बाद पूछेंगे, अच्छा भाई जी, ये और डॉक्टर SK सनातन लिख रहे हैं, डॉक्टर PK मिश्रा लिख रहा है? बोले नहीं, वो लोग तो नहीं लिख रहा है। वो लोग कौन सा ब्रांड लिख रहा है? वो लोग तो पॉलीक्रा लिख रहा है। पॉलीक्रा लिख रहा है, ठीक है, पॉलीक्रा लिख रहा है तो ठीक है। कितना लिखते हैं? 5 बॉटल तो हर रोज़ लिखते ही है, हम देखते हैं कि 5 बॉटल हर रोज़ लिख रहे हैं। और डॉक्टर मिश्रा 10 बॉटल लिख रहा है, कुल मिला के 15 बॉटल लिख रहा है मतलब। अच्छा ठीक है, वो डॉक्टर के बारे में भी मैं जानकारी ले रहा हूँ। अच्छा भैया, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए आपका धन्यवाद। अगले बार जब आऊँगा मैं उसी डॉक्टर जो लोग पॉलीक्रा लिख रहे हैं उसी डॉक्टर के पास जाएंगे और जेलुसिल के बारे में बताएंगे। इसी हिसाब से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आपका और कोई प्रोडक्ट मान के चलिए कि पायरिजेसिक, तो ये प्रोडक्ट आपका है लेकिन डॉक्टर लोग क्रोसिन लिख रहा है या तो कैल्पॉल लिख रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट तो नहीं लिख रहा है लेकिन दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट लिख रहे हैं, कितना लिख रहा है और कौन 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 डॉक्टर लिख रहा है, उसी हिसाब से आप लोग पूरा जानकारी ले लोगे। आपका जहाँ काम कर रहे हो, मतलब जिस दुकान में जा रहे हो, उसका आजू बाजू में जो डॉक्टर लोग बैठते हैं वो लोग का प्रिस्क्रिप्शन उसी दुकान में आते हैं, उसी फार्मेसी में आते हैं पेशेंट लोग, तो उसी हिसाब से आपका पूरा जानकारी लेके आपको प्रिपेयर करके फिर उसी डॉक्टर को प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? RCPA मीन्स रिटेल कॉल प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट।